Hello viewers, the question is a rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to the part A longer side, part B shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? So this is the problem. Now there are two situations. This is the first situation. This is the rectangular loop. For example, let us call the corners as A, B, C, D. There is a small cut here in this particular loop and it is placed inside a magnetic field which is normal to this particular loop. The respective sides of this loop are 8 cm and 2 cm. The velocity is given as 1 cm per second, which is 0.01 meter per second. In the first case, it is pulled along the longer direction, normal to the longer direction. So this is the direction of the velocity in the first case. Now there is a concept of a moving rod. There is a concept of a development of an EMF in a moving rod inside the magnetic field. Suppose this is a metallic rod. It is moving inside the magnetic field in such a manner that the velocity, the length and the magnetic field, all of them are perpendicular to each other. Then in that particular case, the EMF developed is given by this formula E equals to BLV. So we have to use this concept here. Now in the first case, when this particular rectangular frame is moving like this, then this section, AD section, is just outside the magnetic field. So there is no EMF developed across this section here due to the movement, due to the motional EMF. So there is no motional EMF in the AD section. Now AB section is parallel to the direction of velocity. Similar is the case of CD section, which is parallel to the direction of velocity. That is why there is no EMF corresponding to this formula in these two sections, AB section as well as CD section. The only EMF developed according to this rule is in this CB section. Now in the CB section there is an EMF which is given by E is equal to B, which is given in this problem as 0.3 Tesla. The value of B is given as 0.3 Tesla. L, the length we have to take this as 8 centimeter, which is equal to 8 into 10 raised to the power minus 2 meters, and this multiplied by the velocity, which is 0.01 meter per second. So 0.01 meter per second. So after solving this value comes out to be 2.4 into 10 raised to the power minus 4 volts. So this is the EMF developed in the first case. Let us call it as E1. Now we also have to calculate the time taken by during which this EMF persists. It means that time during which this EMF lasts long. The reason is the EMF will die out after some time. The reason is when this section is moving along this direction, rectangular frame is moving in this direction, after a certain time, this CB section of this wire, it also comes out of the magnetic field. At that particular instant, when it just come out from the magnetic field, there is no EMF in this particular part. So we can say that this rectangular frame has to move a distance of BA in this direction, so that this section, CB section, also comes out from this magnetic field and the EMF becomes 0. So we have to calculate this particular time after which the EMF becomes 0. So we know that time is equal to distance upon velocity. So from this equation, the distance which this rectangular frame has to cover so that this CB section just come out is given by 2 centimeter. So 2 into 10 raised to the power minus 2 meters. And the velocity is 0.01 meter per second. So after solving this value comes out to be 2 seconds. So in the first case, the EMF will remain up to 2 seconds. After it will die out. The EMF will become 0. Now the second part. In the second part, this particular rectangular frame is moving along this direction. It is pulled along the shorter side. So in this case, let us call the EMF as E2. It is given by, according to this formula, BLV. It is 0.3 multiplied by L. Now L we have to take for this section AB,
which is 2 centimeter, or we can say that 2 into 10 power minus 2 meters, and this multiplied by the velocity, which is 0.01 meter per second. So this value comes out to be 0.6 into 10 raised to the power minus 4 volts. Now, according to the analysis in the previous part, you can easily see that this section, AD section, is in parallel with this particular velocity vector. Similar is the case for CD section. It is parallel to the velocity vector. So that is why in these two sections there is no EMF. And DC section is outside the magnetic field. That is why there is no EMF in this section. The only EMF is in the section of AB, which is given by this formula. So this is 0.6 into 10 power minus 4 volts. Now the time taken in the second case can be calculated by the total distance covered by this AB section from here up to here, so that it just come out from the magnetic field. So the total distance covered by this section is basically 8 centimeter. After 8 centimeter, this AB section also comes out to this rectangle, this particular magnetic field. So the distance here is 8 centimeter. 8 into 10 power minus 2, and the speed is given as 0.01. After solving this value comes out to be 8 seconds. So we can say that up to 8 seconds this EMF will remain there. After 8 seconds this EMF will become 0. So this is the answer of the second part of this problem. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे जिसमें कि कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसकी साइड्स रेस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं. ये एक स्मॉल इसमें कट दिया गया है और ये मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी एक साइड, लॉन्गर साइड से एक बार ये जो है पुल आउट होता है और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड. यहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होगा, वो ईएमएफ कितना होगा इस पर्टिकुलर स्मॉल कट के ऊपर. अब इसमें जो भी वायर सेक्शन के ऊपर ईएमएफ आएगा वो टोटल जो है इस ओपन सेक्शन में आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है कंसेप्ट जो यूज किया गया वो ये है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक पर्टिकुलर रॉड है जो कि परपेंडिकुलर प्लेस की गई है उस मैग्नेटिक फील्ड से, और उसको इस तरह से पुल किया जा रहा है, उसको वेलोसिटी इस तरह से दी जा रही है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सारे. तो उस केस में एक ईएमएफ डेवलप होता है E=BLV. वो पर्टिकुलर कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है. पहले केस में रेक्टेंगुलर फ्रेम को इस तरह से जो है पुल आउट किया जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से कि इसकी जो लॉन्गर साइड है वहां से उसको पुल किया जा रहा है. तो जैसे ही लॉन्गर साइड मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर होगी तो हम देख सकते हैं कि इस एडी सेक्शन में कोई भी ईएमएफ नहीं होगा. एबी सेक्शन और डीसी सेक्शन में ईएमएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, पैरेलल है. तो इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंगली इन दोनों सेक्शंस में भी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा. ईएमएफ डेवलप होगा इन द सीबी सेक्शन इस केस में, जो कि दिया जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, जहाँ की बी की वैल्यू 0.3 है और एल की वैल्यू हम लेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करके आएगा ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स. और स्पीड जो है हमने कैलकुलेट कर लिया मीटर पर सेकंड, विच इज 0.01 मीटर पर सेकंड. सॉल्व करने के बाद पहला रिजल्ट आता है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट्स. टाइम निकालने के लिए हम कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि जब ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है सीबी सेक्शन जो है ये भी जब जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो ईएमएफ 0 हो जाएगा. हमें वो समय निकालना है जिस समय तक के लिए ईएमएफ बना रहेगा यहाँ पे. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन सीबी को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने के लिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी. तो 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, विच इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय द स्पीड विच इज 0.01. ये वैल्यू पुट करने के बाद टाइम निकल जाता है 2 सेकेंड्स. तो ये पहले पार्ट के दोनों आंसर्स हो गए. दूसरे पार्ट में इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को कुछ इस तरह से मूव करा जाता है कि इसका जो स्मॉलर सेक्शन है वो बाहर चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के. तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि CDA सेक्शन में कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा ड्यू टू द मोशनल ईएमएफ रूल, क्योंकि वेलोसिटी की और लेंथ डायरेक्शन सेम है. सिमिलर केस हम देख सकते हैं CB में भी लेंथ की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है. CD सेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है, तो इसलिए उसके अंदर जो है कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा. केवल जो ईएमएफ डेवलप होगा वो AB सेक्शन में की वजह से होगा. तो यहाँ पे उसको हम निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला E=BLV. तो B की वैल्यू 0.3. L हम यहाँ पे लेंगे शॉर्टर साइड के लिए क्योंकि हम AB सेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो रेक्टेंगुलर फ्रेम के AB सेक्शन की बात हो रही है. तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स और वेलोसिटी हमने रख दी 0.01 मीटर पर सेकेंड. सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ईएमएफ की वैल्यू आती है 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट्स.
समय निकालने के लिए कि कितने समय तक ये ईएमएफ बना रहेगा, उसके लिए हम देखते हैं कि ये सेक्शन ए बी जो है, ये जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आ जाएगा तब तक ईएमएफ बना रहेगा। तो इसका मतलब इस सेक्शन को यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करनी पड़ेगी, तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा। तो टाइम निकालने के लिए जो डिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 8 × 10⁻² मीटर्स, और उसको डिवाइड कर देंगे बाय द वेलोसिटी 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आता है 8 सेकेंड्स। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।